Hello friends, today I will take the lecture 2 of network system. In the first lecture, I have told you about the register and the basic properties of element like active and passive element, bilateral and unilateral element. Okay, so today I will move further and I will discuss the inductor and capacitor. Okay, now if I talk about inductor, then what is inductor? Inductor is just like a coil, na? But its property is important. This property is called inductance, and inductance is the property of inductor which opposes the sudden change in the current. Like see here, I have write that IL0 minus is equal to IL0 is equal to IL0 plus. That means current at t is equal to 0 minus, current at t is equal to 0, and current at t is equal to 0 plus are same. That means in 0 time there is no change in current. What is 0 minus? Just before 0. What is 0? Just at 0. And what is 0 plus? Just after 0. Okay. So inductor sudden change of current को होने नहीं देगा. Okay. Now, what is the basic principle behind the inductor? What is the basic concept? Actually, what happens when a time varying current flowing through the coil, then the time varying magnetic flux will generate. Okay, and this magnetic flux is directly proportional to time varying current. Okay, जब भी किसी coil से कोई भी time varying current flow होता है तो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है जो कि होता है phi is equal to L into IT. Now what is this L? L is your proportionality constant. Okay, so L is why L is my inductor. So what is the unit of L now? Unit of L is Henry, or from here we can write Weber per ampere, phi upon IT. Okay, now from this value of phi is equal to LIT, we can conclude one more concept which is called EMF. EMF क्या होता है हमारा? EMF is equal to minus d phi by dt, means time rate of change of flux. This is also called Lenz's law, which we studied in EMFT. Okay, now if I avoid the negative sign, then I will get Vt is equal to, which is EMF, is equal to L di by dt. Now this phi, this flux value will be L into IT. So I will get the voltage equation across the inductor. Okay, now if I write current equation, then voltage is an integration. Integration of voltage will give me the current. Okay, now this equation 1 and 2, both voltage and current equation, they are both Ohm's law, because Ohm's law gives the relationship between the current and voltage. So Ohm's law is not only valid for resistor only, na? This is valid for inductor, this is valid for capacitor, okay, and resistor, all three. Now if I talk about properties of inductor, then first property will be linear or non-linear. How you will decide whether the inductor is linear or whether the inductor is non-linear? So when flux is equal to LIT, when this equation is valid for constant inductance value, constant L, that means if L is independent of the applied current, we have applied the time varying current, na? If L is independent of the applied time varying current, that means if L is constant, then inductor will be called as a linear, otherwise non-linear. ठीक है, that means अगर आपका inductor
टाइम वेरिंग करंट से इंडिपेंडेंट है तो इंडक्टर क्या है आपका, लीनियर है, अदरवाइज क्या है, नॉन लीनियर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डायनेमिक एलिमेंट। इंडक्टर को हम डायनेमिक एलिमेंट क्यों बोलते हैं एक्चुअली, उसका एक रीजन होता है। वेन एवर इंडक्टर रिसीव्स द पावर इट विल नेवर डिसिपेट द पावर लाइक रजिस्टर। रजिस्टर क्या करता था, पावर को डेसिपेट कर देता था, वेस्ट कर देता था, बट इंडक्टर विल स्टोर दैट पावर इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सो व्हाट इज द पावर फॉर्मूला, V into I, we know that V here from equation 1 we can write L di by dt and I is I. So what is the energy? Now energy will be the integration of power. So energy will be this, and after solving this dt dt will be cancelled and we will get half Li ka square. So you will get the energy half Li square in case of inductor. So I have told you that inductor will store the energy whenever it will receive the power. It will store the power in form of energy. So inductor is a storage element. That's why it is called dynamic element. Okay. Now, if I talk about series and parallel connection, तो ये सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने रेजिस्टेंस में पढ़ा था, इसमें कोई आपका चेंज नहीं है। दैट मीन्स इफ टू इंडक्टर्स और मोर देन टू इंडक्टर्स आर इन सीरीज देन इक्विवेलेंट विल बी देयर एडिशन L1 plus L2 plus L3 and so on. Again the same point which we have discussed in the register, और मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया था उस पॉइंट पे कि फॉर सीरीज देयर विल बी ओनली वन पॉइंट कॉमन and for parallel both the points will be common. Here is short circuit, so this is point 1 and this is point 2. So both the points for both the inductor are common, then it will be in parallel. Okay, so this is the L equivalent for parallel, same as resistor. Okay, now if I take one problem, okay, here 1 Henry and 2 Henry inductors are connected in a block, and there are so many blocks of 1 Henry, 2 Henry, 1 Henry, 2 Henry up to infinity. So अगर टोटलिटी में देखा जाए तो यहां पर इन्फिनाइट ब्लॉक्स हैं 1 Henry और 2 Henry के, और मुझे L इक्विवेलेंट इस स्टार्टिंग पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। नाउ this problem looks like impossible to solve, right? Because there are infinite blocks. How to calculate now L equivalent? बट एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इंफिनिटी माइनस 1 कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है इंफिनिटी होगा। तो इंफिनिटी माइनस 1 अगर इंफिनिटी ही होता है तो इफ देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स, सो इफ आई सेपरेट वन ब्लॉक देन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स ऑल्सो देयर आर इन्फिनाइट नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, सो from this point also the inductor value will be L equivalent. Why? अगर इन पूरे इन्फिनाइट ब्लॉक्स का L इक्विवेलेंट था तो इन्फिनाइट माइनस 1 विच इज ऑल्सो इन्फिनिटी, उन ब्लॉक्स का भी कितना होगा आपका L इक्विवेलेंट. सो हियर आई विल गेट L इक्विवेलेंट अगेन. सो इफ आई सेपरेट दिस ब्लॉक of 1 Henry and 2 Henry, then also at this point I will get the L equivalent. So I can draw like this, 1 Henry 2 Henry block, then again I can write L equivalent for the remaining infinite minus 1 block, because infinite minus 1 is again infinity. So now it is very simple, because L equivalent and 2 they are in parallel and 1 is in series with this parallel combination. So we can simply solve. Here we will get the quadratic equation. After solving we will get the L equivalent is equal to 2 Henry. So this type of problem looks difficult, but they are actually very easy. There are infinite number of blocks, but we have solved just in 2 steps. Okay. Now
if I take about the practical inductor case, then what is practical inductor? Practical inductor is what? When there is a resistance in series. What is the meaning of that? I have told you that inductor is a dynamic element which stores the energy. Okay, it will never dissipate the power, it will never waste the power. And I have told you about the resistor, that resistor whenever receives the power it will dissipate the power. रजिस्टर को जब भी पावर मिलेगा उसको डेसिपेट कर देगा, उसको वेस्ट कर देगा. तो आइडियल इंडक्टर क्या था हमारा? व्हेन देयर इज ओनली एल, देयर इज नो डेसिपिएशन ऑफ पावर. बट कोई भी चीज आइडियल नहीं होती है. इंडक्टर भी कुछ ना कुछ पावर तो डेसिपेट करता ही है. मैक्सिमम अमाउंट वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा, बट सम अमाउंट इट विल डेसिपेट. सो दिस इज गिवन बाय द आर वैल्यू. सो विथ एवरी इंडक्टर there is a series resistance is there. This is called internal resistance, which shows the power dissipation. Okay, and this R value should be as small as possible. Ideally you can say R should be 0, then it will be the case of ideal inductor. But R की कुछ ना कुछ वैल्यू आपकी होती ही है हर एक इंडक्टर के साथ. Okay, okay. The good inductor is what? इंडक्टर कब अच्छा होगा? जब R की वैल्यू as minimum as possible होगी. Now if I take one analytical question, if I told you that why inductor opposes the sudden change of current. In the definition of inductance हमने ये पढ़ा है ना कि इंडक्टेंस जो होता है वो सडन चेंज ऑफ करंट को अपोज करता है, माने करंट को जीरो टाइम में चेंज होने नहीं देता है. Why? Reason is we know that the inductor voltage formula L di by dt. So here di by dt is what? Rate of change of current. करंट का चेंज हो रहा है टाइम के साथ. dt is what? Very small amount of time. di is what? Very small amount of current. d is very small value. Or change in current or change in time. So if dt tends to 0, that means sudden change. That means within 0 time, then 1 upon 0 or something amount upon 0 will give you the answer infinity. That means voltage will tends to infinity. That means if we want the sudden change of current, अगर हम करंट चाहते हैं कि 0 टाइम में चेंज हो जाए, तो we require the infinite voltage across the inductor, which is practically impossible to generate. किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस आप इन्फिनाइट वोल्टेज जनरेट कर ही नहीं सकते हो. That's why इंडक्टर जो है वो सडन चेंज ऑफ करंट कभी भी नहीं होने देता है. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडक्टर के रिस्पेक्ट में. ओके, so this is all about your inductor, basics of inductor. Now if I talk about capacitor, बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने इंडक्टर पढ़ा है, कुछ भी प्रॉपर्टी में खास डिफरेंस नहीं होगा. फर्स्ट थिंग इज सेम. Capacitance is the property of capacitor which opposes the sudden change in voltage. In case of inductor we have studied sudden change in current को oppose करता है. In case of capacitance, sudden change in voltage. Okay, that means voltage at 0 minus or 0 or 0 plus will be same across the capacitor. Okay, this is an important point. When we solve the problem, AC analysis problem of capacitor and inductor, then sometimes we take that inductor opposes the sudden change of voltage or capacitor opposes the sudden change of current, or we sometimes takes that VL0 minus is equal to VL0 or VL0 plus. This is wrong. Always remember that sudden change, that means IL0 minus is equal to IL0 or IL0 plus will be applicable to the inductor. Similarly, VC0 minus, VC0 and VC0 plus will be applicable to the capacitor only. Okay. Now one more important point. In both inductor and capacitor, I have write 0 minus, 0 and 0 plus. 0 minus, 0 and 0 plus is just the example, na? Time t is equal to 0. But we can also take different time value. Like I can write VC4 minus is equal to VC4 is equal to VC4 plus. But 0 is famous value because in transient problem, generally
most of the problem contains switch at t is equal to 0. That's why. Okay. Now, what is the concept behind capacitor? Again, the same thing. The charge Q will be directly proportional to the voltage applied. That means Q is proportional to V. Now, what is the proportionality constant here? C, and C is again should be constant. As I told you, this is a proportionality constant. So what is C then? Q by V. 1 unit we know always कि C की unit होती है farad. But from this formula we can also write the second unit coulomb per volt. Okay. Now, if I differentiate this Q, then dq by dt will be C dV by dt. What is dq by dt? We have studied in the lecture 1 na, that rate of change of charge is called current, right? So I is equal to C dV by dt. Similarly, we can write V is equal to integration of current. So these two again they are called Ohm's law. As I told you in inductor that Ohm's law is not only valid for resistor, it is valid for inductor, capacitor and resistor, all three. Okay, here we get the relationship between the voltage and current. So this is again your Ohm's law. Now, if I talk about properties of inductor and capacitor, then inductor we have studied linear, non-linear, dynamic, series, parallel. Same properties will be applicable to the capacitor. Okay, so first property will be linear or non-linear. Again, if the capacitor value is constant, or we can say if capacitance C is independent of the voltage applied, then it will be called as a linear capacitor, otherwise non-linear. Okay. Now second point is dynamic element. Same thing यहां भी applicable होगी आपकी जो इंडक्टर के केस में हुई थी. कैपेसिटर को जब भी पावर मिलता है वो उस पावर को डेसिपिएट नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, उसको एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है. कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर्स द एनर्जी. दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज आल्सो कॉल्ड डायनेमिक एलिमेंट. इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट एनर्जी, then we can easily calculate power is equal to V into I, we know that, and energy is integration of power. So integration answer will be half CV square, because again dt will be cancelled. So again we can see here that energy is half CV square, and in case of inductor half Li square. Both energies are depending upon their respectively inductor or capacitor values. In inductor L and in capacitor C. And similarly in inductor we have seen the concept of current. So in inductor energy depends upon the current, applied current, and in capacitor we have applied the voltage. So in capacitor energy depends upon the applied voltage. Okay. Now if we talk about series and parallel connection, then this is the important one. Why? Because there is a opposite formula in resistor as well as in inductor. The formula is same. For series there will be addition, and for parallel 1 upon L is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2, or 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. But here there is a opposite relationship. When C1 and C2 are in series, then answer will be 1 upon C is equal to 1 upon C1, 1 upon C2. And if they are in parallel, then answer will be C is equal to C1 plus C2. But what is the reason behind that? Why we get this opposite relationship? The reason is, for inductor, ZL is what? ZL is your impedance. Value is j omega L, directly proportional to L. But for capacitor, ZC is equal to 1 upon j omega C. You can say inversely proportional to C. ZC is
inversely proportional to C. That's why we get the opposite relationship. And what are they? What are these impedance? Impedance are the, you can say, are the tool or are the ohm conversion, ohm unit conversion of any Farad or Henry, you can say. If you want to convert any Farad or inductor unit, Farad or Henry unit in form of ohms, you need to calculate their impedance. Now suppose if I take one example, then you can see clearly here there are lots of capacitance value connected in series or parallel form, here, here, okay, and we need to calculate the capacitance value, equivalent capacitance value between point P and point Q. ठीक है, C इक्विवेलेंट हम लोग को कैलकुलेट करना है. नाउ अगर आपको रेजिस्टेंस का क्वेश्चन याद है तो वहां भी मैंने आपको कहा था कि अगर सर्किट में कहीं बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट नजर आता है, जैसे कि आपको यहां आ रहा है, देयर इज अ ह्यूज शॉर्ट सर्किट. सो एक्चुअल में है क्या कि अगर ये पॉइंट ग्राउंड है आपका, तो ये सारे पॉइंट, this all points and this all points, this all are ground, same point you can say. So this C is between P and ground, this C is again between P and ground, so both C having the same points, both points same, so both C are in parallel, same. Q और ground के बीच में C है, यहां भी Q और ground के बीच में C है, तो दोनों C क्या हो जाएंगे Q और ground के बीच में parallel. So here C parallel, it will become 2C. Here again C and C parallel, it will become 2C. So 4C we have calculated. Now 1C remains between P and Q. So this is the equivalent figure between P and ground. You can say 2C, between Q or ground 2C, and one capacitance between P and Q. Now we want to calculate the equivalent between P and Q. रेजिस्टेंस कैलकुलेशन के टाइम पे आपको बताया था, जहां से आपको इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है बिल्कुल उसके अपोजिट एंड से आपको स्टार्ट लेना है. ओके, सो अगर अपोजिट एंड से स्टार्ट लेंगे हम लोग, तो दिस 2C एंड 2C विल बी इन सीरीज एंड दिस C विल बी इन पैरेलल विद द सीरीज कॉम्बिनेशन. मतलब 2C सीरीज में हो गए और उनके कॉम्बिनेशन के साथ C आपका पैरेलल में हो जाएगा. तो 2C इन 2C सीरीज कितना हो जाएगा आपका, 2C सीरीज में C बन जाएगा, और C और C पैरेलल में कितना हो जाएगा आपका 2C. तो टोटल आपका जो C इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आपका 2C. सो अगेन, चाहे आपने देखा हो रजिस्टर में, चाहे आपने देखा हो इंडक्टर में, चाहे आपने देखा हो कैपेसिटर में, हमने तीनों में एक एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स ली हैं. और प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट लगती थी देखने में, लेकिन प्रॉब्लम थी बहुत आसान. रजिस्टर और कैपेसिटर में आपको बहुत बड़े बड़े शॉर्ट सर्किट नजर आए, और इंडक्टर में इन्फिनाइट ब्लॉक्स नजर आए, जिसको आपने इन्फिनाइट -1 प्लस इन्फिनाइट ब्लॉक्स में आपने कन्वर्ट कर दिया. मतलब आपने एक ब्लॉक को कॉमन ले लिया था और फिर आपने सॉल्व कर लिया था. तो इक्विवेलेंट सर्किट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वो होते बहुत इजी हैं, बट फिगर आपको बहुत टफ नजर आएंगे, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है. ओके, नाउ इफ आई अगेन टेक वन एनालिटिकल क्वेश्चन, why C opposes the sudden change in the voltage, जो हमने पढ़ा था ना, that is VC0 minus is equal to VC0 is equal to VC0 plus. तो इसका रीजन क्या है कि आपका वोल्टेज सेम क्यों रहता है, जीरो टाइम में चेंज क्यों नहीं होता. उसका रीजन है that current across capacitor is given by I C dV by dt. So sudden change, that means if dt tends to 0, something upon 0 कितना हो जाएगा, infinite. That means I tends to infinity. That is, for sudden change in voltage across capacitor, we required infinite current, which is practically impossible. हम लोग ये कर ही नहीं सकते. Infinite current कभी भी किसी कैपेसिटर से फ्लो नहीं हो सकती है. That's why
sudden change in voltage across capacitor is impossible. Okay, so if I consider practical circuit of capacitor, बिल्कुल सेम होता है जैसे हमने इंडक्टर में पढ़ा, बट इसमें एक और चीज होती है, दैट इज लीकेज पाथ. क्या होता है हम डिस्कस करते हैं. अगर कैपेसिटर आपका आइडियल होता तो सिर्फ सी होता, बट कैपेसिटर चूंकि प्रैक्टिकल है इसलिए सीरीज में आपका एक रजिस्टर लगा होगा. दैट मीन्स कैपेसिटर will store the energy as well as it will dissipate the small amount of power. That means again resistor value should be as small as possible. Now what is this R2? हम लोग जानते हैं ना कैपेसिटर के अक्रॉस लीकेज होता है, तो ये R2 आपको लीकेज पाथ प्रोवाइड करता है, और आइडियली R2 शुड बी एज हाई एज पॉसिबल. मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो आइडियल केस में R1 आपका 0 होना चाहिए, दैट इज शॉर्ट सर्किट, एंड R2 आपका इनफिनाइट होना चाहिए, दैट इज ओपन सर्किट. तो ये आपका होता है प्रैक्टिकल सर्किट ऑफ द कैपेसिटर. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द रजिस्टर बेसिक्स, कैपेसिटर बेसिक्स एंड इंडक्टर बेसिक्स. और हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स भी पढ़ लिए हैं, एक्टिव, पैसिव, बायलैटरल, यूनिलैटरल, तीनों के केस पे ही हमने पढ़ा है. नाउ अब अगर मैं फर्दर बात करूं तो फर्दर हम लोग को अब नेटवर्क सर्किट को सॉल्व करने के बेसिक्स पढ़ने हैं, लाइक केवीएल, केसीएल, करंट डिवीजन, वोल्टेज डिवीजन. ये सारे रूल्स हमें अब सीखने हैं ताकि हम किसी भी नेटवर्क सर्किट को सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखाऊंगा. ओके, थैंक यू. इफ यू हैव एनी डाउट you can mail us. This is our email ID, eidelhi@gmail.com. Okay.